कि वो तमाम सियासतदान जो मेरे वालिद के खिलाफ थे उनको भी तख्तेदार पर लटका दे, मगर शहीद बीबी ने इस मुल्क के अवाम की खिदमत की। सदर जरदारी जब सदर बने तो बीबी शहीद हुई थी। जिन लोगों ने सदर जरदारी को 12 साल जेल में डाला था, जिन लोगों ने सदर जरदारी का जबान काटा था, गला काटा था, जिन लोगों ने मेरे कारकुनों को शहीद किए, तशद्दुद किए, वो कह सकता था कि अब मैं मुल्क की तारीख में सबसे ताकतवर सदर हूं, मैं इनके सब के साथ वो ही करूंगा जो मेरे साथ हुआ था। मगर सदर जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया और इस मुल्क के अवाम की, इस मुल्क की खिदमत की, इंतकाम नहीं लिया। इंशाअल्लाह ताला आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे तो मेरा पहला हदायत ही यही होगा कि तमाम सियासी कारकुन जो सियासी कैदी बन चुके हैं उनको रहा करो। और दूसरा, मेरे लिए ये हराम होगा कि मैं अपने दौर हुकूमत में अपने मुखालिफ के सियासी कारकुन को गिरफ्तार करूं। मेरे लिए ये हराम होगा कि मैं अपने मुखालिफ के बहनों को, अपने मुखालिफ के बेटियों को पकड़ के जेल में डालूं। इंशाअल्लाह ताला मैं इस मुल्क और कौम को एक करके सबको आपस में मिला के जो हमारे संजीदा मसाइल है, मुआशी बहरान का मसाइल का मुकाबला करूंगा, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करूंगा। दहशतगर्दी एक बार फिर अपना सर उठा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, उसका मुकाबला करूंगा। खारजा सतह पे पाकिस्तान का इज्जत बहाल करूंगा। जिस तरीके से कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहाँ के अवाम को बाहर नौकरियां दिलवाए थे, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नौजवानों को नौकरियां दिलवाए थे, इंशाअल्लाह ताला मैं अगर आपका वजीर आजम बनता हूं तो एक बार फिर पाकिस्तान के नौजवान जापान से लेके अमेरिका तक नौकरियां करेंगे। हमारा पाकिस्तान का इतना मकाम है, हमारे नौजवान इतना मेहनत करते हैं, इतना सलाहियत रखते हैं कि हम अगर उनके लिए नियत के साथ काम करें। मैंने 16 महीना आपका बहैसियत वजीर खारजा काम किया था और मैंने देखा है, मैंने पूरा दुनिया देखा है कि किस तरीके से अगर हम संजीदगी के साथ काम करें तो दुनिया भी आपके साथ संजीदगी के साथ काम करने के लिए तैयार है। मसला सिर्फ इतना कि जो बाकी सियासी जमातें हैं वो तो सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील चुके, वो अब आपकी खिदमत करने के बजाय आपस में इतने लड़े हुए हैं कि उनमें से जो भी हुकूमत में आए आपकी खिदमत करने के बजाय वो यही लड़ाई जारी रहेगा। तो हमारा पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान के और पंजाब के अवाम से ये अपील है कि 8 फरवरी को आपके पास एक ही ऑप्शन रहा है जिससे आप तमाम साजिशें को नाकाम करवा सकते हो, और वो ऑप्शन ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तीर है, ये कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की तीर है। ये इस मुल्क के गरीब, इस मुल्क के किसान, इस मुल्क के नौजवान, इस मुल्क के मजदूर, इस मुल्क के मेहनतकश, इस मुल्क के सफेद पोश तबका, इस मुल्क के अक़लियतों की तीर है। आए सब मिलके एक बार फिर तीर पे थप्पा लगाए और हम मिलके इंशाअल्लाह ताला मेहनत करेंगे, इस मुल्क की किस्मत बदलेंगे, इस मुल्क के अवाम की किस्मत बदलेंगे। नारे भुट्टो। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो गुजरात में जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे मुखालिफिन घर से ही नहीं निकलते, ये वो शेर है जो किसान और आवाम का खून चूसता है, हमें वोट दें, शेर का रास्ता रोकेंगे। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि कोई तो वजह है शेर शिकार के लिए नहीं निकल रहा, वो आवाम को बता ही नहीं रहे कि अगर आगे आ गए तो करेंगे क्या।
सियासी कैदी ना होने का तो ऐलान कर दिया, ज़ाती जेलों के खात्मे का भी ऐलान करें। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को मशवरा, मंडी बहाउद्दीन में यूनिवर्सिटी के क़याम का वादा, कहा 9 मई को पाकिस्तान से दुश्मनी की गई। 2014 के धरने में नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई, पार्लियामेंट को आग लगाने की बातें हुई। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनकर ज़रई पैकेज देंगे, गंदम चीनी बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 15 साल एक सूबे में हुकूमत करने वाली जमात के पास बताने के लिए 15 मंसूबे भी नहीं। नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे गिनवा सकती हूँ। मरियम नवाज की बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद, कहा पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। एक शख्स पंजाब में आकर कहता है नवाज शरीफ ने मंशूर नहीं दिया। नवाज शरीफ ने सिर्फ कागज़ पर मंशूर नहीं दिया, अमल भी किया। अहम खबर शामिल करते हैं, आपको बताएं कि बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर 2023 का फैसला बहाल किया जाता है। तफसीलात जान लेते हैं, बोलिए उसके नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के इंतखाबी निशान और तरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक तफसीली फैसला जो है वो जारी कर दिया है। 38 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि 10 जनवरी 2024 का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर 2023 का फैसला बहाल किया जाता है। फैसले में कहा गया कि ये बात नाकाबिल फहम है कि पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन के सामने पहले पेश होने का कहा और फिर 20 दिन बाद उसी पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक कुछ नहीं कर सकता। फैसले में यह भी कहा गया कि पेशावर हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को भी नजरअंदाज किया। पेशावर हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के हतमी फैसले का इंतजार तक न किया। लाहौर हाई कोर्ट में यह मामला लार्जर बेंच के सामने जेर समाअत था। पेशावर हाई कोर्ट के सामने महज सर्टिफिकेट का मामला नहीं था, बल्कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला था। और यह भी कहा गया है कि अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट के मुतल्लिका जजेस ने जो है वो सिर्फ सर्टिफिकेट के इजरा के मामले को तो देखा, लेकिन तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले से जो है वो पेशावर हाई कोर्ट ने पहलू तय की है। और इस सवाल से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन का ऐसे हालात में मुकम्मल इख्तियार है, ताहम पेशावर हाई कोर्ट का के इख्तियारात में दखल अंदाजी जो है वो इख्तियारात से तजावुज है। फैसले में कहा गया कि हाई कोर्ट कैसे इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर के फैसले को गैर कानूनी करार दे सकती है। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसले में इलेक्शन कमीशन को सिर्फ सर्टिफिकेट के इजरा तक जो है वो महदूद कर दिया। हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 209 की शेक 1 को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद ही सर्टिफिकेट का मामला जो है वो आता है। बरतानिया में इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक कोई मखसूस कानून मौजूद नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सियासी जमातें वहां पर भी पार्टी इलेक्शन नहीं कराती। इस सवाल से सुप्रीम कोर्ट ने बोरिस जॉनसन की मिसाल देते हुए फैसले में कहा है कि 2022 में बोरिस जॉनसन वजारत उज़्मा से दस्तबरदार हुए, लेकिन उन्होंने अपना जानशीन मुकर्रर नहीं किया। फिर उसके बाद जो है वो बरतानिया की कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर इंतखाबात हुए और जिसके बाद अल्जबा ट्रस्ट ने जो है वो वजारत उज़्मा का ओहदा संभाला और रशी सोनक को जो है शिकस्त दी। बाद में अल्जबा ट्रस्ट ने भी इस्तीफा दे दिया, तो कंजर्वेटिव पार्टी ने जो है वो बिला मुकाबला जो है वो रशी सोनकर को जो है वो मुंतखब किया। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़े तौर के ऊपर कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात में वोट का फैसला जारी किया गया। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच इन तफसीलात के लिए। एक और आम खबर है, पाक बहरिया की मश्क सी स्पार्क 2024 की इफ्तिताही तकरीब। एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR की जानिब से बताया गया है मश्क के अगराज व मकासद और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। मश्क का मकसद पाक बहरिया की जंगी हिकमत अमली का जायजा लेना है। तफसीलात जान लेते नुमाइंदा खुसूसी सलमान अहमद से। सलमान, क्या तफसीलात? जी बिल्कुल, पाकिस्तान नेवी की मश्क 30 स्पार्क 2024 कराची में शुरू हो गई है और इस हवाले से ISPR ने जो तफसीलात जारी की हैं उसके मुताबिक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। और इस हवाले से जो आज ब्रीफिंग दी गई उसमें बताया गया कि मश्क में पाकिस्तान नेवी के तमाम कॉम्बैट एसेट्स के साथ साथ PMA और स्पेशल फोर्सेज और पाक मरीन भी शामिल होंगे। मश्क 30 स्पार्क की अगर हम बात करें तो उसमें पाकिस्तान नेवी के साथ पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स के अहलकार और असासे भी
जॉइंट ऑपरेशन करेंगे। तो एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि इस मश्क के अंदर पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज जो है वो हिस्सा ले रही हैं। और ISPR ने यह भी बताया कि ये मश्क खित्ते में अमन और सलामती को बरकरार रखने के हवाले से पाकिस्तान के अज़्म को मजीद तकवीत फराहम करेगी। इफ्तिताही तकरीब में जो कि आज कराची में मुनक्किद हुई, उसमें वफाकी वजारतों के साथ साथ वजारत दिफा, वजारत खारजा, कानून और नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के नुमाइंदों के साथ मुसल्लह अफवाज के ऑफिसर जो हैं वो भी शरीक थे। जी बहुत शुक्रिया सलमान इन तफसीलात के लिए। एक और आम खबर दें आपको, उभरता भारत और उसके असरात, साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल रिटायर्ड जुबैर हयात का खिताब। इंडिया से भारत बनना बहुत बड़ी तब्दीली है। जनरल रिटायर्ड जुबैर हयात की जानिब से ये कहा गया, इंडिया से भारत बनने के पीछे अखंड भारत का जो ख्वाब है, इंडिया से भारत की मिसाल को हिटलर के तीसरे दौर से तशबीह दी जा सकती है। जनरल रिटायर्ड जुबैर महमूद हयात ने मजीद कहा कि भारत बनने के पीछे हिंदुत्व की बुनियाद है। मोहन भगवत RSS का बड़ा लंबरदार है। हिंदुत्व के बानी ने भारत को फादरलैंड और होली लैंड करार दिया। जवाहरलाल नेहरू ने दाएं बाजू की हिंदू इंतहा पसंदी को खतरा करार दिया। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान बताइए। जी बिल्कुल, आज बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात का इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने भारत के अंदर जो हालिया तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं, खासतौर पर जो भारत की ट्रांजिशन है इंडिया से भारत की जानिब और ये भारत बनने के जो खित्ते के ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर असरात मुरतब होंगे, उसके हवाले से उन्होंने बात की। उनका कहना था कि हिंदुत्व का कल्चर जो है, हिंदुत्व के नजरियात जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान या खित्ते के दीगर ममालिक के लिए खतरा नहीं, बल्कि बतदरीज ये खतरा जो है मगरबी ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लेगा, क्योंकि जो हिंदू नेशनलिज्म है उसको भारत। सलमान आबान बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। फॉरेन सेक्रेटरी की जानिब से इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। Today we will present details of a sophisticated and sinister Indian campaign of extraterritorial and extrajudicial killings inside Pakistan. We have credible evidence of the links between Indian agents and the assassination of 2 Pakistani nationals on Pakistani soil. These are killings for hire cases involving a sophisticated international setup spread over multiple jurisdictions. Indian agents use technology and safe havens on foreign soil to commit assassinations in Pakistan. They recruited, financed, and supported criminals, terrorists, and unsuspecting civilians to play defined roles in these assassinations. Indian media and social media accounts immediately claimed and glorified these killings as successful retribution against enemies of India and projected their capacity to carry out these illegal acts. Potential assassins were recruited using social media, talent spotters, and fake Daesh accounts. There was complete compartmentalization of various components of the operation with the employment of teams of financiers, locators, and assassins. Elaborate exit plans were developed to obscure all potential tracks. At this stage, we are sharing information on 2 cases. A few other similar cases are under investigation, and we will reveal details about these in due course. The assassination of Shahid Latif. On 11 October 2023, Mr. Shahid Latif was assassinated outside a mosque in the city of Sialkot. A detailed investigation revealed that an Indian agent, Yogesh Kumar, based in a third country, orchestrated the assassination. Yogesh Kumar recruited Muhammad Umair, a laborer in that third country, to act as a contact with local criminals in Pakistan to trace and assassinate Shahid Latif. They recruited local criminals who were able to locate and trace Shahid Latif. However, they were unable to carry out the execution. After some other failed attempts, Muhammad himself was personally sent to Pakistan to carry out the assassination. Umair organized a team of 5 target killers, which after the first failed attempt on 9th October 2023, succeeded in assassinating Shahid Latif on 11th October 2023. Based on the confessional statements and technical evidence, law enforcement authorities quickly apprehended the target killers
including Muhammad Umair, who was trying to flee the country on 12th October 2023. All those involved in this reconnaissance, surveillance and killings have been apprehended, and a case is being tried in the court of law. We have evidence of transactions made in the process linking the entire chain to Indian agent Yogesh Kumar. The second case is of Muhammad Riaz. Another Indian agent was involved in the killing of another Pakistani national, Muhammad Riaz, who was assassinated during Fajr prayers in a mosque in Rawalakot on 8 September 2023. Law enforcement agencies tracked the killer, Muhammad Abdullah Ali, and arrested him on 15th September 2023 while boarding a flight at Jinnah International Airport, Karachi. Interrogation revealed that Muhammad Abdullah Ali was recruited and guided by Indian agents Ashok Kumar Anand and Yogesh Kumar. Indian agents utilized social media app Telegram to recruit Muhammad Abdullah Ali, who was asked to locate Muhammad Riaz. Muhammad Abdullah Ali received payments through middlemen based in a third country. He was also provided with weapons and ammunition. After a failed attempt on 7 September 2023, Muhammad Abdullah Ali succeeded in killing Muhammad Riaz on 8 September 2023. The law enforcement authorities apprehended Muhammad Abdullah Ali and his supporters and facilitators from various cities in Pakistan. The case is being tried in a court of law. Based on the confessional statements of Muhammad Abdullah Ali and technical evidence, the investigators quickly identified the facilitators in Pakistan as well as in third countries. We have documentary, financial and forensic evidence of the involvement of the two Indian agents who masterminded these assassinations. We are releasing the passport details of Yogesh Kumar and Ashok Kumar. We have also reached out to the governments of the relevant third countries. As I have said earlier, there are a few other cases of similar gravity at various stages of investigation. The conclusions one is forced to draw from this very serious and disturbing information is that these cases reveal a growing sophistication and brazenness of Indian-sponsored terrorist acts in Pakistan. They fit the pattern of similar cases which have come to light in other countries, including Canada and the United States. Clearly, the Indian network of extrajudicial and extraterritorial killings has become a global phenomenon. Pakistan has remained a target of extrajudicial killings. We are now witnessing an increased sophistication in these operations as revealed in these two cases. It is critical to bring to justice the killers, their facilitators, and financiers involved in these assassinations. Indian agents need to face justice for their extrajudicial and extraterritorial killings in Pakistan and other countries. India must be held accountable internationally for its blatant violation of international law. India's assassination of Pakistani nationals on Pakistani soil is a violation of Pakistan's sovereignty and a breach of the UN Charter. This violation of Pakistan's sovereignty is completely unacceptable. Pakistan remains committed to protecting its people and securing its own sovereignty. Protection of Pakistanis and any foreign national on Pakistani soil is a high priority for the government of Pakistan. India's reckless and irresponsible act calls into question India's reliability as a credible international partner and its claims for enhanced global responsibilities. Thank you. Okay, we will have a few questions because of the very busy schedule of the Foreign Secretary. We will keep this session very limited and request that the questions be focused only on the topic that is at hand. Ji Mateen Haider Sahab. Assalamu alaikum. Thank you, Mr. Foreign Secretary. This is an extraordinary network that you have shared information on Indian terrorism and proxy networks. What's the evidence of these killings that took place in Pakistan, and
how these killings connects to the government of India. Do you have some more evidence and details? Please share. Thank you. The evidence is quite extensive. For instance, when the assassinations were carried out, there was a jubilation in certain circles of the Indian social media, gloating over the killings, that this was just retribution for enemies of India. There is also evidence of linkage of these killings with the Indian agent Yogesh Kumar and the Ashok Kumar Anand. There are confessional statements of Umair and the other gentleman who has carried out the second assassination and their facilitators, and they have pointed the Pakistani authorities out to other members of the network who are now in our custody. We also have evidence of financial transactions, communications, and thus establishing a link between these Indian masterminds and the various facilitators and then the actual criminals who carried out the acts. Taken together, this is a fairly comprehensive package of evidence which clearly points out to the involvement of these Indian agents, we believe at the behest of their state, to carry out these assassinations on the territory of a sovereign state in complete violation of international law. And then there is the general atmosphere about this. We are not the only ones saying this. There is evidence also which the Canadian authorities have shared, and there is also news of the United States where another agent, Indian agent, has been caught trying to conduct a similar activity there. So taken together, it is fairly clear what India is doing in complete violation of international law. Mr. Nazim. Thank you, ma'am. This is Mohammed Nazim from Anadolu Agency. Do you think are these killings in Pakistan linked to similar events in USA and Canada? So have the investigators found any similarities in these killings in Pakistan? Thank you. The modus operandi, if you look at it, I'm sure you mentioned it, United States and Canada, and what happened. The modus operandi seems quite similar, that instructions are received by Indian agents, we believe, from their headquarters back home. They then go about looking for contacts and contract killers in the local community, and then they execute the crime. In the case of the United States, the agents by chance ran into an informant who then subsequently referred them to an undercover officer in the United States. But the modus operandi seems to suggest that yes, there is a similarity in how these assassinations are being carried out. Ms. Simon. Some information cannot be shared at present because it is of